Very good morning, students. In our last videos, I taught you Unit 3rd, and in Unit 3rd we have read about the girl child. But this is the 4th unit, and in this unit we will read and we will discuss about the environment and greenery. How we can save the environment and how we can save our forest and how we can save and protect our forest from fire. So this is the most important thing, and that I will teach you in that video. So the unit first from unit first and unit up to unit 3rd we have already read, and this is unit 4th, which name is greenery, means haryali. Grow more trees, increase greenery all around because the greenhouse gases have increased manifold. That means we have to plant everywhere. That means we have to start the plantation. As if you have a garden at your home, then you have to care it. हमें जो हरे पौधे हैं या फिर प्लांटेशन है वो लगाना चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ती जा रही है, और उसको रोकने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ लीडिंग टू वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम. इफ़ ऑल द ट्रीज वुड बी कट फ्रॉम द ऑन द अर्थ, देन the burning gases will produce, and day by day, and our earth would become very hot. So for saving our earth to become very hot, we have to do the plantation every day, and we have to lead a thing and which is related to the environment. This is the section first of unit 4, green trees, हरे पौधे. Many holiday resorts have been set up after felling trees. That means when the trees have fallen down from somewhere or from land, then at the time the trees would be removed from there, and the resorts are built there. मीन्स जहाँ पर पेड़ पौधे या तो गिर जाते हैं या फिर पेड़ पौधों को काटकर वहाँ पर रिजॉर्ट्स बना दिए जाते हैं. These resorts have colorful, well-lit artificial trees, and you know, dear student, that all the resorts we have seen in our indoor or out of our city, that there are many resorts and which are very colorful, and there are so many lights and they are very well decorated to attract the people. Those go there to enjoy their holidays and parties and etc. Many more things for the people go there for enjoying the holidays also. But can they ever replace our natural trees? We have already seen that in many resorts there are colorful trees, and they are artificial trees, but they cannot replace the original natural trees, because natural trees gives us many things. The most important thing, the oxygen they give us, by which we can not live, and it is unable, and we are unable to live without oxygen. So here it is said that trees are cut and the resorts have built there for the enjoyment of people. We were green trees. Here tree says about their life, and they are telling their story, that they are green trees. Now we are just logs. But when we cut any tree, then it has become a log only. जब आप ट्री के टुकड़े कर देते हो या उसकी लकड़ियों को काट लेते हो, उसकी ब्रांचेस को काट लेते हो, तब वो एक लॉग बन जाता है, लकड़ी का एक टुकड़ा बन जाता है. Neatly stacked for making tables will soon be hacked. Here the trees are telling that they are cut and they are hacked for making the tables and furnitures. The people cut the trees for making the furnitures. So they are saying that the trees are saying that we are green, we are not lows. The first thing builders do is to cut and pelt us down. We have seen
that in many areas the trees cut down and many big buildings are built there. Many factories are built there and parks and factories and companies and many buildings have कंस्ट्रक्टेड देयर. हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पर ट्रीज़ को काट कर क्या कर दिया जाता है, वहाँ पे बिल्डिंग, फैक्ट्रीज या फिर कोई कंपनीज बना दी जाती है. समवेयर वी हैव सीन दैट ट्रीज आर कट एंड फ्रॉम द फॉरेस्ट द वे इज गोइंग ऑन and trees are cut and the people make road inside the forest. Without thinking they clear the ground. मीन्स बिना कुछ सोचे समझे क्या करते हैं लोग, पेड़ों को काट देते. वो ये नहीं सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, अगर ट्रीज ना होंगे तो हम कैसे जिएंगे, हमारी लाइफ कैसी होगी, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं सोचते. couldn't they leave some of us around? Whenever trees are telling their story that whenever the people go and cut the trees, but they don't think of the future and they cut the trees and make new buildings and the ways for transportation. There were plenty of us, dear students. In previous time, if we will talk about the previous times, और जब हम पिछले दिनों की बात करें, मीन्स हम प्राचीन समय की बात करें, तो उस वक्त बहुत छोटे छोटे घर होते थे. इवन बहुत सारे पेड़ जगह जगह पर पाए जाते थे. रोड के दोनों साइड पर पेड़ हुआ करते थे, जिससे कि जो लोग हैं उनको फ्रेश एयर भी मिलती थी ब्रीथ करने के लिए. इवन कुछ लोग वहाँ पर उस पेड़ की छाया में क्या करते थे, आराम भी करते थे. Sapling, creepers, climbers and trees, the builders cleared the place and now call it celebration grace. Many things like small plants, here sapling means small plants, and creepers you know well, those are those creep on the land only, that plant. And the climbers, those climb on the walls and the places, trees. The builders cut all the things and they clear the ground to make the factories and companies and many more things, like many ways for transportations and many cities. like जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग बना दी जाती है और एक उसको नाम दे दिया जाता है, जैसे ओमेक सिटी है ना, सिलिकॉन सिटी है. इस टाइप से एक बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना दी जाती है और उनको एक नाम दे दिया जाता है. और ये जो कॉलोनीज होती है ये सिटी से बिल्कुल कॉर्नर पे मतलब बना दी जाती है, जहाँ पे लोग आराम से रहना पसंद करते हैं. तो जंगलों को काट कर, इवन ऐसी प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं उनको काट कर वहाँ पर नई नई चीज़ें बना दी जाती हैं. एंड फोर्थ, सेलिब्रेशन ग्रेस ओनली. like we have already read in our first para that builders do that on builders cut the trees and make the resorts there. जो लोग हैं अपने एन्जॉयमेंट के लिए रिजॉर्ट्स जाते हैं, वहाँ पर वो पार्टीज या सेलिब्रेशंस करते हैं. तो रिजॉर्ट्स भी जो होते हैं वो कोई नेचुरल नहीं होते हैं और वहाँ पर आर्टिफिशियल चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है. बट उनकी प्लेस जो है, जो नेचुरल ट्रीज़ हैं, उनकी प्लेस कोई भी नहीं ले सकता, कोई आर्टिफिशियल ट्री नहीं ले सकता. विथ प्लेंटी ऑफ ट्रीज ऑन विच नो बर्ड्स सिंग्स. Dear student, we know well that birds go on the natural trees only, not on the artificial trees. They are in search of only the natural trees because they want to make a nest on there and they have to lay eggs there. And the trees are the home of only bird and the animals. If all the trees would be cut down, then where would they live? अगर सारे पेड़ काट दिए जाएंगे तो फिर जो पशु है, पक्षी है, वो कहाँ रहेंगे. ऑन विच नो बर्ड सिंग्स, नो फ्लावर ब्लूम, इन स्पाइट ऑफ ब्राइट लाइट्स दे आर इन ब्लू. मीन्स सिर्फ लाइट को देखकर क्या होगा कि जो ट्रीज़ हैं दे विल ओनली ग्लूम. मीन्स वो क्या होंगे, वो सेट होंगे वो देख के, बिकॉज दे आर नेचुरल ट्रीज. बट when the lights and decoration are doing on the artificial trees, then they cannot become the substitute of that trees.
orange, red, blue, green, glitter and green. Here the trees are telling that there are many colors in trees, but they cannot take the place of the original trees of natural trees. But these man-made trees can't do what we could. That means the things which is done by the trees, the artificial trees cannot do. Means उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. जो कि natural trees करते हैं वो artificial trees नहीं कर सकते. क्या आप जानते हो? Could they breathe? क्या वो breathe कर सकते हैं? क्या वो हमें ऑक्सीजन दे सकते हैं? The artificial trees, if the artificial trees could give an oxygen, fruit, leaves, they cannot give anything to us because they are artificial, they are not natural trees. We get oxygen, beauty and wood. Here the trees are telling that they provide us oxygen to breathe and wood and beauty. Dear student, you have seen the garden near your home, then you have seen the beauty of the garden because there are many trees. When the trees breathe and the fresh air come, it looks very beautiful. It looks very awesome. So dear student, we have to plant trees in our garden also. So now if you cut, chop, chip, hack, hew or slash, here trees are telling that whatever you want to do, if you want to cut any part of us and you make the मीन्स कि वो आप उसका चाहे काट के ढेर लगा दो, कितने ही छोटे टुकड़े में काट लो. कीप द फ्रेशनेस ऑफ ट्रीज इन माइंड. लेकिन माइंड में ये बात को ध्यान रखो कि जो फ्रेशनेस आपको नेचुरल ट्रीज दे सकते हैं वो आपको आर्टिफिशियल ट्रीज नहीं दे सकते. Nothing can substitute us, nothing in kind nor cash. Here the trees are telling that there is no substitute of the trees. Trees के बराबर कोई भी नहीं है और ना ही artificial trees उसकी जगह ले सकते हैं. We cannot buy the trees and how they are kind. Their kindness is spread everywhere. They are very kind. Nobody can take their places. So this was the story of trees and the मीन्स जो उनकी लाइफ पर जो बीत रही है वो अपनी जो लाइफ की जो बातें हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं. सो दिस वॉज द पोएम अबाउट ट्रीज एंड द एनवायरनमेंट.